Hello student, our today's topic is print correspondence. तो लास्ट लेक्चर में हमने क्रेडिट मेमो पास किया था विद करस्पॉन्डेंस. अब हम उसे प्रिंट करके देखेंगे. फॉर दैट वी कैन यूज ट्रांजैक्शन कोड F.61 और बाय पाथ SAP S अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल, पीरियोडिक प्रोसेसिंग, प्रिंट करस्पॉन्डेंस एज पर रिक्वेस्ट. SAP में जाते हैं. SAP S, financial accounting, accounts receivable, periodic processing, print correspondence and as per request. Now enter our correspondence ZTRE1, our company code TRE1, then our user, that is Priyanka, and now click on execute. A correspondence request was selected. Would you like to issue the request? Yes. Output device LP01, then click on continue. तो देखो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट दिख रही है. नाउ गो टू सिस्टम, ओन्स पुल रिक्वेस्ट. देखो यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है. तो इसको ओपन करने के लिए आप क्लिक कर सकते हो. देखो यहाँ पर हमारा करस्पॉन्डेंस क्रिएट हो चुका है. नाउ डबल क्लिक ऑन अनदर. यहाँ पर हमारे डिटेल्स आ चुके हैं एंड हियर हमारा समरी. बैक जाते हैं. Now we will display and change line item. For that we can use transaction code FB-N or by path SAP S accounting, financial accounting, accounts receivable, account display and change line item. SAP में जाते हैं. Come back. Now go to account FBL5N, enter our customer, and open item, then click on execute. तो हमारी ये एंट्री है क्रेडिट मेमो की. डबल क्लिक ऑन इट. Now click on column document overview and then go to environment correspondence. Enter our customer number 50000001234678. okay, 336784. And then click on continue button. Just click on side, click on allow button. Okay, now click on standards. Go to search and select here bill header. Okay, this one, and just click on continue button. Now click on again continue button.
then click on print preview. Enter our output device, that is LP01, and print preview बटन. देखो यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ चुका है. Now click on back button and now we will add some more standards. Go to continue, item consumption object. Text ID, okay, this is item consumption. Body text rental, body text, body text rental object, rental, and appraisal email text, appraisal email text. Now click on continue, just click on continue and then click on print preview. Come back, again come back, save changes to clipboard first, yes. Now we will see again environment, correspondence, customer, continue, click on allow button, standard, our first is bill header, object text, item consumption, another one is item consumption, next one is body text rental, next one is appraisal, email text. Click on continue, continue. Now click on save button, save, 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 come back,